Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we are going to start our subject that is political science, and my target audience are UPSC students will be my target, UPPSC students will be my target, और अदर वो सभी बच्चे, सभी एस्पिरेंट्स जिनके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है आर माय टारगेट ऑडियंस. अगर ये क्लियर है तो मूविंग टुवर्ड्स माय लेक्चर सोर्सेस. सर व्हाट विल बी योर सोर्सेस? So I want to explain you my sources will be NCRT books also, that is 11th NCRT with the name of Indian Constitution at Work. At the same time, 11th NCRT, Political Theory, and then 12th NCRT, Politics in India since Independence, and then 12th NCRT, second book, that is Contemporary World Politics. But that nowhere means that I'm going to ignore 6th to 10th NCRT even. That means my lecture will contain the material of 6 to 10th also. अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है कहीं पे explanation part की, I will add that also. Now, सबकी favorite book, that is the second source, that is Indian Polity by M. Laxmikant will be also entertained here. And then Yellow Book of Political Science, and then Current Affair, जो भी मैगजीन्स आती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, एड ऑन करेंगे. इवन न्यूज़पेपर्स, जबकि पता है आपको कि हमारा सब्जेक्ट स्टैटिक नहीं है, इट्स अ डायनामिक सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो राइट टू बी फॉरगेटन बुक्स में नहीं दिया गया है, लेकिन न्यूज़पेपर्स में अगर उनका जिक्र हो रहा है तो हम वहां पे उन चीजों को भी इंटरटेन करेंगे. दैट मीन्स दीज विल बी सोर्सेज. ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए मैंने आपको रिव्यू कर दिया है. नाउ लेट अस डिस्कस द कंटेंट. एक रोड मैप डिस्कस करते हैं. सर कैसा रहेगा ये सफर, कैसे कैसे क्या डिस्कस करेंगे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं. स्टैंडर्ड कंटेंट रहेगा. नॉर्मली सभी स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ये सही चैप्टर सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिल जाया करेंगे. नाउ प्रीएम्बल, और मैं यहाँ आपको साइड में आपको लिख रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना लूंगा इन टॉपिक्स को लेके. फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल आज मैं डिस्कस, जो आज का टॉपिक है प्रीएम्बल, जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, विल टेक अराउंड 1 to 2 hours. Okay, at the same time, next topic is Constitution of India. That means here the historical background we will discuss, that what was company rule, what was crown rule, है ना, what are the salient features. At the same time, part 1 of the Indian Constitution, that is from Article 1 to 4, that what is this India, that is Bharat shall be union of state, what this means, and then admission of state, alteration of boundary, we will discuss here. This will take around 2.5 hours. Okay, now then we will talk about citizenships also, nagarikta. At the same time, I will relate this with current also. Why this Akshay Kumar has been terminated from citizenship of India. That now he have Canada citizenship. है ना? Again, how this Mother Teresa get this Indian citizenship, Sonia Gandhi get this citizenship, Indian citizenship. That means there is process of registration and all. We will discuss here also. I will make it interesting for you. And then fundamental rights. It's a huge topic, an important topic also. I will take around 6 hours for this, and then around 2 hours, you can say 2 hours for fundamental duties and all. And then the active principle, where I will take 2 hours more. And moving ahead, that is the union. When we will be discussing about the union at part 5 of the Indian Constitution, then I will take around 6 hours again, a huge topic. Here I will talk about the impeachment of the president. What is president? है ना? We will discuss about prime minister, cabinet, council of ministers. There are many more, vice president also, attorney general, functions क्या है? We will discuss here. So this will take time. है ना? At the same time, proceeding also. What is zero hour and all? In the parliament, what is Lok Sabha, Raj Sabha? है ना? Anti-defection law. In Hindi, you call this Tal Badal Kanun. We will all discuss here. What is Gaya Lal and Ayalal? है ना? Gaya Lal, Ayalal concept we will discuss here also. Around here I will take 3 hours. Then in judiciary, what is Supreme Court, High Court and all. What is this writs, jurisdiction, habeas corpus and all. I will discuss in this topic. And then later we'll discuss about the state government and state executive also. State legislature, for example, in center we talk about what is Lok Sabha and Raj Sabha. At the same time, we will talk about Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, that is legislative assembly and legislative council here also. And then administration, we will discuss about 2 hours around emergency provision. We will discuss, है ना, interesting भी बहुत है काफी. We will discuss here कि क्यों लगाई गई थी emergency, which type of emergency was imposed. And then the third tier of our government, that is Panchayati and municipality, 73rd and 74 will be discussed about 2.5 hours. And then constitutional bodies again.
They are constitutional, non-constitutional body. I will take around 3 hours. And moving in the last, कि जो भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं आई विल ऐड विद करंट अफेयर बट एट द एंड देयर आर मैनी मिस्टीनियस टॉपिक्स which were uncovered. I will take extra class for this around 3.5 hours class where I will like to discuss the topic which I will not discuss in the above topics. For example, you recently in the newspaper I was reading about this mobile tap. Is this legal? Is it the breach of Article 21? है ना? तो who can just pass the order of just allow pass the order that that person can tap someone's phone? There are 10 lists. We will discuss about these topics in the last class. Now, this was the roadmap, and now starting that this is our real constitution book. उसकी इमेज आपके सामने है. अब देखिए और समझने का प्रयास करिए. And now you will understand it's a book. It's a book, but it's a living book. Now, बच्चों, sir, you must be telling something wrong. He said it's not a living book, it's a non-living thing. बट बच्चों पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग बुक कहते हैं. लिविंग बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरी बुक के अंदर वो क्षमता है कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल सके. दैट मीन्स दैट मेक माई बुक लिविंग बुक. तो ध्यान रखना कि दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अमेंडमेंट फीचर. बिकॉज ऑफ दिस आर बुक इज कॉल्ड लिविंग बुक ऑल्सो. अगेन, तो बच्चों आपको अगर आपको ध्यान में आए कि लिविंग बुक हमने क्यों कह दिया कि इसके पास बदलने की क्षमता है. ये किताब इस तरह से दिखाई देती है. पीछे कवर कुछ इस प्रकार सा है. आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये यहाँ पे दिया है. अगेन, जैसा कि मैंने कहा आपको मेरी बुक एक लिविंग बुक है, तो मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल बुक और मेरी बुक में क्या सिमिलरिटीज है. जिस प्रकार से अगर आप एनसीईआरटी बचपन से पढ़ते हैं फेमिलियर भी होंगे कि अगर आप एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज खोलते हैं तो यू विल फाइंड इंट्रोडक्शन इन योर बुक. उसी प्रकार से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज खोलते हैं यू विल फाइंड प्रीएम्बल. हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं. सिमिलरली जिस तरीके से ये है वैसे उसी तरीके से है. मेरी प्रीएम्बल मेरी कॉन्स्टिट्यूशन बुक को इंट्रोड्यूस करती है लोगों को. अगर आप पेज फ्लिप करेंगे यू विल फाइंड इंडेक्स इन एनसीईआरटी, है ना. द सेम टाइम schedule present in my constitution. पोजीशन सेम नहीं है. लास्ट पेज पे है, लास्ट एंड पे है कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन मैंने कंपेरिजन करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है. अगेन, स्केड्यूल को हिंदी में अनुसूची कहते हैं. जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तो केवल 8 स्केड्यूल थे, बट आफ्टर फोर अमेंडमेंट्स ये नंबर आज की डेट में 12 है. तो कई बार ये एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आ जाता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल थे, ठीक अभी कितने हैं. वी विल डिस्कस अबाउट देम आल्सो. आई विल गिव यू द ट्रिक आल्सो टू रिमेंबर दिस. देयर इज वन लाइन, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. इस ट्रिक से हम इन 12 स्केड्यूल्स को याद कर सकते हैं. आई विल डिस्कस दिस आल्सो बट इन लेटर क्लास. एंड देन you will flip page, one more page, you will find chapters. Chapter 1 deal with this, chapter 2 deal with this. Similarly in my book also you will find parts. हिंदी में भाग कहते हैं कि 22 पार्ट्स हैं, लेकिन कुछ अमेंडमेंट के बाद कुछ एक्स्ट्रा जो अमेंडमेंट्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि कुछ ऑथर्स 25 पार्ट्स लिखते हैं. फॉर एग्जांपल पार्ट 4 है बीपीएसपी है, पार्ट 4 ए है फंडामेंटल ड्यूटीज है. तो कुछ लोग इसको अलग अलग काउंट करते हैं. जो लोग अलग काउंट करते हैं 25 लिख रखा है, जो साथ में करते हैं 22 पार्ट्स यहाँ पे लिख. अगर आपको इतना ध्यान है तो आप आगे बढ़ेंगे इस तरीके से कि जिस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मेरी किताब में वर्ड्स मिलते हैं, अक्षर मिलते हैं आपको. एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पे आर्टिकल्स मिलेंगे बच्चों. अगेन, कितने आर्टिकल्स थे जब संविधान बना था? अराउंड 395 आर्टिकल्स वर देयर. राइट नाउ around 448 articles are present. When you face problem with your book, you run towards your teacher. Similarly, when our people, our Indians, our citizens find problem with this book, they run towards Supreme Court of India to interpret the Constitution. There are many times when Supreme Court of India interpreted this Constitution, है ना. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. समवेयर अगर कभी भी एग्जामिनेशन पूछता आता है निम्नलिखित में से किसे आप गार्डियन कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं, तो यू कैन हिट द ऑप्शन दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सिमिलरली जिस प्रकार से किताबों के ऑथर होते हैं उसी प्रकार से इनको लिखने वाले कौन है?
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। आप सबके मन में आ रहा होगा भीमराव अम्बेडकर जी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मैंने क्यों कहा, अम्बेडकर जी क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी माइनर और मेजर कमिटीज बनी थी, है ना, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी। उसके चेयरपर्सन थे भीमराव अम्बेडकर जी, है ना, जो कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, अगेन अब आता है बच्चों कि आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि ये जो किताब है तो प्रिंट हो गया, टाइप हो गया, आती है ना, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हाथों से लिखा गया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा वो व्यक्ति को जिसने इसे हाथों से लिखा है। ही इज दैट पर्सन। इनका नाम अगर देखूं, आपके नाम लिख देता हूं। इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, और इनकी जरा हैंडराइटिंग आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में, कितना साफ सुथरा लिखा गया है। इन हैंडराइटिंग से अट्रैक्ट होते हुए इनको दिल्ली के शांति निकेतन से बुलाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। वन मोर थिंग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया था बच्चों। अगेन दिस वाज द फनी वे टू प्रेजेंट माय बुक इन फ्रंट ऑफ यू, जिससे आप फेमिलियर हो पाए कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है बच्चों, एक बुक है। ठीक है, अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं तो अब मैं अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करता हूं। माय टॉपिक इज प्रीएम्बल। अगेन मैंने कहा कि इसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें एमसीक्यू के फॉर्मेट के हिसाब से, इसे कहां से लिया गया है, कहां से अडॉप्ट किया गया है, तो यूएसए से अडॉप्ट किया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट। लेकिन इसमें दो क्वेश्चन आता है, इसका कंटेंट कहां से लिया गया है बच्चों। इसका कंटेंट लिया गया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है। एंड नाउ व्हाट दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो ये मीटिंग थी जो नेहरू जी ने अटेंड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बताते हुए कि आर कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक समथिंग लाइक दिस। ही गेव द वर्ड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि वहां पे जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो। लेटर द पीपल हैज, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इस बात का ध्यान भी रखा। आपको ये जो एक पेज दिखाई दे रहा है यही प्रेम्बल है। और आप कभी भी अगर आपने नोटिस किया हो अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो आपने देखा होगा कि चाहे मैथ्स की बुक हो, साइंस की बुक हो, एनसीईआरटी के सभी बुक्स के फर्स्ट पेज पे प्रीएम्बल होता है। बिकॉज क्यों, कि दिस समवेयर इज अ समरी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आवर गवर्नमेंट वांट पीपल टू नो द समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या है एक्चुअली हमारा संविधान। तो हर किताबों में होता है, अगर आप चाहें तभी भी जाकर देख सकते हैं। इसको 4 पार्ट्स में कह सकते हो कि 4 इंग्रीडिएंट्स कंटेन करता है ये प्रीएम्बल। जैसे कि फर्स्ट लाइन जैसे आपको दिखाई दे रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं सोर्स ऑफ पावर डिस्प्ले कर रहा है। सोर्स ऑफ पावर क्यों लिखा मैंने, तो जस्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस किताब को ताकत कहाँ से मिल रही है। कोई पूछता है आपसे, व्हाट यू विल से, गवर्नमेंट? नो बच्चों, इस किताब को ताकत लोगों से मिल रही है। दैट मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट इसका है सोर्स ऑफ पावर। सेकेंड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 शब्द आपके नेचर ऑफ द स्टेट को दर्शाते हैं। एंड द थर्ड पार्ट, दिस 4 words, that is justice, liberty and equality and fraternity, somewhere display the objective। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके। एंड द लास्ट, अ डेट, दैट इज डेट ऑफ अडॉप्शन 26 नवंबर 1949। दिस इज द डेट। ये द 4 इंग्रेडिएंट्स, है ना। अगर आप देख पाए, देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे आपको कि क्या था सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो क्या है, इट ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स दिस बुक गेट्स इट्स पावर कहाँ से, फ्रॉम द पीपल। Now, next point, I explain the nature of the Indian state. That means it declared India as a sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. And I'm going to explain you these words also. Okay, what does this sovereign means? Sovereign means that country is free, internally and externally, to take their own decision. That country will be called as sovereign country. Suppose before 1947, our country was colony of Britain. So that time India was not sovereign. But after 1947, India became a sovereign country. Why? Because India can take its decision by its own. Socialist. Again, when we talk about socialist, you must be thinking a country where state control everything. But I will clear here, no. In Indian perspective, this is not true.
Why I'm saying this? Because in India, you will find both public and private are allowed to deal with this Indian economy. Just look at this very carefully. That means our Supreme Court interpreted again that this word may have come from West, but we are not communist socialism. We will not follow communist socialism. We'll follow democratic socialism. That means here both public and private will be allowed to access those resources. इसीलिए हम बने socialist country. One more interesting thing, if after 42nd Amendment Act this word was added, that means there were few words which were not present in the preamble earlier. Later it was added in 42nd Amendment Act 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं. व्हाई? बिकॉज एट दिस टाइम इंदिरा गांधी ट्राइड टू चेंज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. अगेन, तो विच वर दो थ्री वर्ड? वन वॉज द सोशलिस्ट, अभी मैंने लिखता हूँ वन यहाँ पे, वन. अदर वॉज सेकुलर, द वन मोर वर्ड वॉज इंटीग्रिटी. दिस थ्री वर्ड वर एडेड लेटर. आपको ये ध्यान रखना है. अगेन, ये ऑर्डर भी ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर में इस नेचर को एक्सप्लेन किया गया है. Again, I explained you the sovereign word, I explained the socialist word. Now, secular. In Hindi, we call it dharm nirpekh. That means our country is neutral towards all religion. को पता होगा, India has not declared the official or you can say national language of national religion of India. No. But at the same time, if you will look at your neighboring countries, है ना, neighboring, suppose यहाँ पे आप श्रीलंका आपने सुना है, यहाँ पे श्रीलंका has declared कि इनका national religion क्या है, बुद्धिज्म है. सिमिलरली पाकिस्तान का देखेंगे तो इन्होंने डिक्लेयर किया इस्लाम उनका रिलीजन है. तो कंट्री डू डिक्लेयर दिस, लेकिन आर कंट्री हैव नॉट डिक्लेयर्ड एनीथिंग. No, democratic बहुत बचपन से सुने हुए हो. Democratic है derived from two word, that is democratos. Demo means people, kratos means to rule, democracy. And somewhere India follow indirect democracy. That means people elect their representative, they administer our country. That is democracy. Republic, what does republic mean? A country where a normal citizen can also become head of the state. That country is republic. For this, I will draw a two block for you. Pay attention. Suppose this block is people. Okay. The other block is head of the state, head of the state. Again, head of the state कौन था बच्चों? You must be thinking about president. Head of the government कोई पूछे, you will say prime minister. Head of the state कोई पूछे, or you will say president. Now I will write here direct and I will write here indirect. What does it mean? A country where people elect their head of the state through direct or indirect election for fixed tenure of time, that country will be republic. अगेन, डायरेक्ट में आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा यूएसए, और इनडायरेक्ट में हम खुद इंडिया. दैट मीन्स ऐसा कोई भी कंट्री जहां पे लोग हेड ऑफ द स्टेट को चुनते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक निश्चित समय के लिए. फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में आप 4 साल के लिए चुनते हैं, इंडिया में आप 5 साल के लिए चुनते हैं, है ना. दिस वर्ड मीन्स रिपब्लिक. होप यहां तक आप साथ में होंगे. अगेन, अगर आप देख पाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सॉवरेन, आई एक्सप्लेन यू, है अ कंट्री विच इज फ्री, है ना, फ्री टू टेक देयर डिसीजन इन इंटरनल पॉलिटी ऑल्सो, एक्सटर्नल ऑल्सो. सोशल आई एक्सप्लेन यू, यहाँ पे दोनों प्लेयर्स के रोल होता है. ये आई एक्सप्लेन दिस ऑल्सो. सेकुलर आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू, धर्मनिरपेक्ष आई सेड इन हिंदी. एंड नो, एंड द सेकंड वर्ड आई सेड कि अ कंट्री विच इज न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, दिस कैन बी हियर. Again, when I say this, you must have one question also. Is, sir, you said India is secular country, but Indian government do intervene in some matter, है ना? So I will explain later also what is this inter-religious domination, what is intra-religious domination in such a matter. If any religion is found to do any type of discrimination against people or men or women or whatever, then you will find yes, Indian government can intervene in few matters. For this, Supreme Court has said that India is not that secular country that is in West. India is somewhere follow Indian secularism. That means if a religion is found to do such type of discrimination, that can be eliminated. For example, in recent
recent year, you will find triple talaq has been, है ना, removed now. This was a religious matter, that how this government has uh, taken that decision. Yeah, this become a questionable thing. Yeah, that fall under discrimination against women. We will discussing about this also. I explained you democratic, what is democracy, democratic government. I explained democracy, this republic word also. Now, what are the objectives? We will talk about objectives and all. Yes, justice. Justice is the objective. Why you are making this a huge constitution? Because you want कि आपके लोगों को न्याय मिले. न्याय कैसा? सोशल लेवल पे. मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं कि you are somewhere barring a section of the people, you are not allowing them. तो ये नहीं. सोशल इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, यू मस्ट हैव फाइंड इन इंडिया कि सभी लोग इक्वल हैं, है ना? सभी लोगों को एक वोट करने का अधिकार है. दिस इज समवेयर द पॉलिटिकल जस्टिस, है ना? इस बात को आप ध्यान समझेंगे इस वर्ड के. सेकंड वाज लिबर्टी. यस, यू मस्ट हैव फाइंड कि हमें यहाँ पे एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट है, दैट इज लिबर्टी. आपको रुकावटें नहीं है ना? लेकिन रुकावटें कैसी है बच्चों? हर तरीके से अपने बात को रखने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जो आपकी बिलीफ है उनको फॉलो करने का, फेथ रखना है, वर्शिप करना है करो, वर्शिप नहीं करना है मत करो, है ना? अगेन दिस वर्ड वाज बोरोड फ्रॉम द आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. आपको ये कई बार पूछ लेते हैं होकर के. फॉर एग्जाम्पल, मैंने इससे पहले कहा था यूएसआर, है ना, सोवियत ब्लॉक के बारे में बात किया था कि जस्टिस का वर्ड हमने वहां से बॉरोड किया, ये कॉन्सेप्ट को किया. वैसे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. इक्वालिटी बहुत आसान वर्ड है ना बच्चों? इक्वालिटी दैट मीन्स कि यहाँ पे सभी को समानता का व्यवहार रहे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इस बात की बात करते हैं. ओके, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव, दिस वाज द फोर three words, and the last word is fraternity, that means brotherhood. That means brotherhood. Again, this word was taken from the French Revolution. अगेन यहाँ पे एक इंटीग्रिटी वर्ड मैंने बताया था आपको, क्योंकि पहले नहीं था, लेटर इट वाज एडेड, है ना? आपको ध्यान रखना है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उसे लेटर बाद में ऐड किया गया. अगर आप यहाँ तक साथ में हैं तो अब वी आर मूविंग अहेड. लेकिन उससे ही पहले, this page we were discussing. Recap. The first part we talk about the source of power. Second, the nature of the state. The next third part, the third ingredient was the objective. And the last somewhere we were missing, that is date. इसके पीछे भी थोड़ी सी कहानी है, उसको डिस्कस करते हैं. यहाँ पे लिखा हो गया 26 नवंबर 1949. लेकिन सर, what is this date? 26 जनवरी 1950. And now I will write one more date, that is 26 January 1930 also. This date of adoption is here, but formally हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था. What is this date? This date is of लाहौर सेशन, जहां पे नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया फ्रॉम दिस डेट कि इंडिया इज समवेयर फ्री. इंडिया इज समवेयर गोइंग टू फॉलो दिस स्वराज. स्व मीन्स सेल्फ, राज मीन्स रूल, सेल्फ रूल. But on this date we somewhere in a position to complete our constitution. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने to give tribute to that idea, to our forefather, to our ancestor. होता नहीं है बर्थडे में हम लोग केक उसी दिन कट करते हैं जिस दिन एक्चुअल में जिस डे पे बर्थडे होता है, ऐसे करके. तो उसी तरीके से हमने इसी दिन पूरी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लेके आए. इसका मतलब यहाँ पे ये है. तो आपको ध्यान रखना है तीनों डेट्स को लेके कि क्या कौन सी डेट पड़ी हुई है प्रेम्बल पे, आपको ये याद रखना. नाउ, अगर आप यहाँ तक साथ में हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज preamble as the part of constitution. And this heading very interesting. You must be feeling कि सर इसमें डिबेट कैसा? किसी बुक का पहला पेज उसका तो पार्ट होगा ही होगा. Why you are discussing this, sir? I am discussing this because there was a time जब preamble को संविधान का पार्ट माना नहीं गया. Yes, this is true. The year was 1960. In Berubadi case, they give a judgment where they said no, preamble is not a part of the constitution. Now, this was now reversed, you can say, in another case, that is highest judges bench case till now. Okay, hope you understand the meaning of this. Keswanand Bharati case in 1973. What judgment they give? They gave a judgment, no, do preamble is do part of the Indian constitution,
but this is non-justiciable. That means whatever written in this on this, you cannot bring in front of court and say that this is was written here and you are not giving me. And that means it's not justiciable, but this is the part of the Indian Constitution. So hope you will remember this both cases and the importance of these both cases. And now interesting one more interesting point, the amendability. What is a preamble amend हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Interesting question, but if you may have focused on my lecture, then you must have observed I have said yes, there were time 1976 when constitution this preamble was amended. There are three words were added, that is socialist, secular and integrity. But at the same time बच्चों, now I will give you one idea of basic structure कि केशवरन भारती केस में एक वर्ड निकल के आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, that power to create is not to power to destroy. That means now parliament have the power to create new thing, amend thing, but they cannot amend everything now. Look at this very carefully. There are few basic structure जिसे altered नहीं करना चाहिए. So they have said कि okay, whatever the basic content in the preamble cannot be amended even by the parliament. है ना? इसी के लिए आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, दैट इज आर्टिकल 13 की है, जहां पे आप जानते हैं जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं कि अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा कर देती है जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट। हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल वाले चैप्टर में। अगेन, यहाँ तक हमारा प्रियम्बल का टॉपिक था, हमारा आज की क्लास थी। होप आपको समझ में आया होगा कि चार इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, है ना? पहला है आपका सोर्स ऑफ पावर, दूसरा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लास्ट में डेट ऑफ अडॉप्शन को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्या पार्ट है कि नहीं है, अमेंडेबिलिटी को डिस्कस कर लिया। आज के लिए हमारे पास इतना ही था। ध्यान रखिएगा, कुछ कीवर्ड बताया मैंने आपको। प्रीएम्बल को आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, प्रीएम्बल को समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। समटाइम दे आस्क यू इन एमसीक्यू एंड ऑल। अगर आपको ये बात समझ में आती है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।